Hello students, good morning everybody. I Hemant welcome you at Hemdisha English classes. Today I am taking pleasure to summarize 11th class lesson number 2 from Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. This chapter consists of very good adventurous situations of a businessman. So go through it properly. Such an enthusiastic way has been adopted to explain the lesson and summary also. I request you to go through line by line. Before that, open your book and start reading, and after that you can go through the summary by line. I request you to listen it carefully so that you will be able to achieve good score in your examinations so far as marks is concerned. If you are new for my channel, so I request you to subscribe and don't forget to hit the bell icon, like and share so that your all friends will be benefited. So let us start. We are not afraid to die if we can all be together. Lesson number 2 from Hornbill 11th class. This story is written by Gordon Cook and Alan East. Let us start the summary. First, I would like to summarize in English, after that in Hindi. So, let us start. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. Lesson number 2 from Hornbill 11th class. In July 1976, the writer with his wife Mary, his 6-year-old son Jonathan and his 7-year-old daughter Susan set out from Plymouth, England to take a sea voyage around the earth like James Cook did 200 years ago. They started in their boat, Walker. In the first phase of their journey past Wales, they sailed down the west coast of Africa. Then they took Larry Weasel, an American and a Swiss house figure, to help them sail through southern Indian Ocean. In the second day they started their journey from here. They faced difficulty due to storm gales that continued for weeks. The waves rose as high as 15 meters. On 25th December, they had traveled 3,500 kilometers toward the east. They celebrated Christmas. On the second day of New Year, the weather became worse. Strong waves rose in the sea. They slowed the boat down and attached lifelines and life jackets. Suddenly the wind stopped and thunder struck. A strong wave hit the writer and smashed his head into the big tub. Soon he was sinking. He accepted his coming death. The wayworker was also low tossed, but a wave set him upright. Another wave threw him onto the deck. He leaped side with boat and his mouth was filled with blood and broken teeth. He held the wheel to enable the boat course. That time actually we can call it better. They enabled to boat face the next wave. His wife told him that they were sinking. He asked his wife to hold the wheel and run to save the boat. The two crewmen were already trying to pump the water out. His daughter had suffered from a head injury, but he could not attend to it. One side of boat had opened up. He managed to do some repairs. The pumps got blocked due to debris. The electric pump also fell due to short circuit. The spare pump, the sail and the anchor had been wrenched. He managed to find another pump. The water pump was out of hold. Sue had swollen much and she had a cut on her arm also. Next morning the situation was under control. They took rest in rotation
They had survived for 15 hours, but the boat was not in a condition to take them to Australia. He calculated that two island must be some 100 kilometers to the east. Now on 4th January, the water was satisfactory pumped out. They ate some biscuits and corned beef after a gap of nearly 2 days. This happiness did not last long. Soon the weather became rough, the wind started blowing at 40 knots, and the waves started to go high and high again. Next morning his son asked if they were going to die. He assured him of survival and determined to fight the odds. He made arrangements that the undamaged sides of ships passed west. Once they thought their end was near, but the boat drove out of the storm. Next morning, the wind slowed down. He made calculations using an uncorrected compass, for the main compass had been lost in the storm. He asked Larry to stay the course of 185 degrees and expected to spot the island at around 5 p.m. Then he went to sleep at 6 p.m. He woke up and feared to have missed the island, but was informed that they have spotted the Amsterdam. His children loved him as the best daddy and the best captain for this. They anchored the boat. Next morning, the inhabitants helped them. He thought of the contribution of his wife, children, and two crewmen in the challenging times. So students, here summary gets over. His summary gets over here, and I would like to switch over for Hindi summary for the same lesson. We are not afraid to die if we can all be together from 11th class lesson number 2. Let us start next. July. Now I will be switching over as I told you in Hindi summary. जुलाई 1976 में वर्णनकार जो कि 37 वर्षीय व्यापारी था, अपनी पत्नी मेरी, 6 वर्षीय बेटे जोनाथन तथा अपनी 7 वर्षीय बेटी सुजैन के साथ प्लाईमूथ इंग्लैंड को बंदरगाह से वेवाकर नामक नौका से दुनिया का समुद्र के रास्ते चक्कर लगाने के लिए चला। और जैसे कि कैप्टन कुक ने 200 साल पहले किया था, उनकी यात्रा का पहला चरण आनंददायक था। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। अब उन्होंने 2 लोकल लहरी, एक अमेरिकन नागरिक तथा हब एक स्विस नागरिक को लिया ताकि वे साउथ इंडियन ओशन दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी सहायता प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों, ये 11th क्लास का पाठ है हॉर्नबिल से। लेसन नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लिखा गया है गॉर्डन कुक और एलन ईस के द्वारा। ये मैं 11th क्लास के पाठ हॉर्नबिल से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं ये समरी फिर से हिंदी में जो पहले लाइन बता चुका हूँ उनका फिर से मैं थोड़ा सा एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा कि जुलाई 1976 में वर्णनकार जो कि 37 वर्षीय व्यापारी था, अपनी पत्नी मेरी, 6 वर्षीय बेटे जोनाथन तथा अपनी 7 वर्षीय बेटी सुजैन के साथ प्लाईमूथ इंग्लैंड की बंदरगाह से वेवाकर नामक नौका से दुनिया का समुद्र के रास्ते चक्कर लगाने के लिए चला, जैसे कि कैप्टन कुक ने 2 साल पहले किया था। उनकी यात्रा का पहला चरण आनंददायक था। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। अब उन्होंने 2 लोगों, लहरी तथा एक अमेरिकन नागरिक तथा हब एक स्विस नागरिक को लिया ताकि वे साउथ इंडियन ओशन दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी सहायता प्राप्त कर सके। यहाँ से अपनी यात्रा के दूसरे दिन से ही उन्हें तेज हवाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। 25 दिसंबर को वो 3500 किलोमीटर पूर्व की तरफ पार कर चुके थे। उन्होंने क्रिसमस मनाया। नववर्ष के दूसरे दिन ही मौसम खराब हो गया, समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। उन्होंने नौका की गति को कम किया तथा ऑफलाइन मतलब जीवन रक्षा हेतु रस्सियां तथा जीवन रक्षा जैकेट्स पहन ली। इसमें क्या हो गया कि बहुत डिस्टर्बेंसेस आ गए, एकदम हवा का रुकना, तूफान का आना, उनका सिर टकरा जाना एक चालन पहिए से,
और उनको क्या लगा हमारी मौत सामने है, तो चलिए हम मौत को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा उनको लगा। लेकिन क्या हो गया, मौत तो फिलहाल नहीं आई, मौत की तरफ ही थे। उनके बाएं तरफ की पसलियां टूट गई, उनका मुंह खून से भर गया तथा दांतों से भर गया। ये बहुत दुखद वाली बात थी बिजनेसमैन के लिए। उन्होंने जाकर चालन पहिए को संभाला जिससे नौका आने वाली लहरों का सामना कर सके, और खुद नौका को बचाने लग गया। उनके बेटी के सिर में चोट लगी थी, पर उसके पास इतना समय नहीं था कि वो कुछ देख सके। इसके अतिरिक्त पंप, नौका की पोत तथा एंकर तूफान में पूरी तरह से मुड़ चुके थे। शिव के सिर पे काफी सूजन आ गई थी, उसकी बाह पर एक घाव भी था, और बिजली वाला पंप तो बिल्कुल फूक चुका था। अब अगली सुबह का आना हुआ। कुछ स्थिति तो कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, परंतु नौकायान ऑस्ट्रेलिया की जाने की स्थिति में नहीं थे। तो उनका एक अनुमान था कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर दूर पर कुछ द्वीप होने चाहिए, आइलैंड। 4 जनवरी का समय था, पानी काफी हद तक बाहर निकल चुका था, लेकिन उनके पास उन्होंने थोड़ा सा खाने को था तो खा लिया 2 दिन के बाद, लेकिन ज्यादा समय तक उनकी खुशी नहीं रही। 40 की नॉट की गति से हवा चलने लगी, समुद्र में फिर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उनके बेटे ने उनसे पूछा अगले दिन, क्या पापा हम क्या मौत की तरफ हैं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम अवश्य बच जाएंगे। उसने इंतजाम किया था कि नौका का वो हिस्सा लहरों के साथ ही क्षतिग्रस्त नहीं है, तो उनको लगा कि अंत निकट है, ये तो उनको लगा था, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। उनका कंपास कहीं तूफान में खो गया था। उन्होंने लेरी से जहाज को चलाने को कहा। कैसे चलाने को कहा? 185 अंश के ऊपर। इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब उसने सोचा कि चलो, लेरी ने कि शाम 5 बजे तक उन्हें आइलैंड तो दिख जाना चाहिए द्वीप। फिर वो सो गया। शाम 6 बजे तक उनकी नींद खुली तो उसे लगा कि द्वीप जरूर छूट गया होगा। उसके बच्चों ने उसे बताया आइल एम्स्टर नामक द्वीप मिल चुका है, और बच्चों ने उसे सर्वश्रेष्ठ पिता और सर्वश्रेष्ठ कप्तान कहा। उन्होंने जहाज का लंगर डाला और सुबह आइलैंड के पास पहुंचकर जितने भी रहने वाले लोग थे, इनहेबिटेंट्स के थे, उन्होंने उनकी सहायता की, और विपत्ति के समय में पत्नी बच्चों